everyone, so let's move towards our today's topic, which is coagulation disorder is caused by deficiency of clotting factor. What? Coagulation disorder is caused by deficiency of clotting factor. And bleeding disorder, what were the bleeding disorder? Bleeding disorder is something that cause bleeding, excessive bleeding, and which reduces the bleeding time and which increases the bleeding time, so this will lead to bleeding disorder. But coagulation disorder, it is the deficiency of clotting factor. Okay, mainly the clotting factor 8 and clotting factor 9. खैर ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा डेफिशिएंसी से ये कॉज हो सकता है वो है विटामिन के. क्यों? विटामिन के लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और ये क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन में सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये हेरिडिटरी फैक्टर से होते हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ हैं. वॉन विलेब्रैंड डिजीज़ की बात करते हैं. वॉन विलेब्रैंड डिजीज़, एज वी नो द यूजेस ऑफ वॉन विलेब्रैंड फैक्टर. What are the von Willebrand factor? Von Willebrand factor are the one which will be secreted from the endothelial cells. When the endothelial cells are ruptured, they will secrete and they help in platelet aggregation. प्लेटलेट को बुलाएंगे और अपने साथ ज्वाइन करेंगे GPB1 रिसेप्टर से. खैर, अच्छा, वॉन विलेब्रैंड फैक्टर जो स्टेबलाइज करेगा वो फैक्टर नंबर 8 को करेगा और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं. ठीक है. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ब्लीडिंग को कॉज करते हैं. ब्लीडिंग इनके अंदर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होती है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज तो क्लॉटिंग होगी नहीं, कम होगी तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा. ज़्यादातर ये इनहेरिटेड होते हैं एंड it can be von Willebrand disease is something which is caused by the defect in function of clotting factor or platelets. Okay, von Willebrand factor factor 8 के फंक्शन को इन्हेंस करते हैं. ठीक, अगर von Willebrand factor डिक्रीज हो गए सो क्या होगा? फैक्टर 8 जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में कि इट विल लीड टू डिफेक्ट इन फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग. ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर सो जब क्लॉटिंग फैक्टर का फंक्शन डिफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है फैक्टर 8 की. अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 इट विल कॉल्ड एज हीमोफीलिया A. इफ द फंक्शन ऑफ फैक्टर 8 is defected or is abnormal or it is not functional properly, so this will lead to von Willebrand disease. There are two types of von Willebrand disease, type 1 and type 2. Type 1 is autosomal dominant. As I said, the von Willebrand disease are autosomal dominant. This is caused by von Willebrand factor decreases. When von Willebrand factor, there are 3 cases. If von Willebrand factor is decreased, okay, if the production is decreased, the disease will called as type 1 von Willebrand disease. If the von Willebrand factor is not producing, if producing in a lesser amount, it will called as type 1. But if it is not producing, this will call as type 2A, because type 2 von Willebrand disease are classified into 2 types, type 2A or type 2AB. So type 2A is something which is caused by which is caused when von Willebrand factor is not producing, is not synthesizing. But if the von Willebrand factor is producing at a normal rate, but it is excreted, it is removed rapidly, this will called as type 2B von Willebrand disease.
इन शॉर्ट वापस बता देता हूँ, वापस अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 कब होगा? जब वॉन विलेब्रेंड फैक्टर बन रहा है लेकिन कम बन रहा है। वॉन विलेब्रेंड फैक्टर टाइप 2A कब होगा? जब वॉन विलेब्रेंड फैक्टर बन ही नहीं रहा। और टाइप 2B कब होगा? जब वो बन रहा है एक नॉर्मल रेंज पर लेकिन ये रिमूव हो रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जब ये रिमूव हो रहा है रैपिडली, दिस विल कॉल्ड एज टाइप 2B वॉन विलेब्रेंड डिजीज। So guys, take care of yourself and study hard, work hard, and good luck. Bye.